So hi everyone, this is your anchor Lakshmi from Team Pankhuri, and I would like to welcome each and everyone present here in our today's wonderful session that is no makeup look. Right now all the girls want makeup, but they want makeup like no makeup. So that's why we came up today's session, and we are going to start the session in just 1 or 2 minutes. But before that, I want to know that you all are ready for today's session or not. So if you are ready, then please put a thumbs up in the chat box so that we can start our session. So come on everyone, and Saloni, please let me know if they are putting thumbs up in the chat box. Yeah, sure, Lakshmi. Yes, so our participants are ready? Yes, I can see that our participants are ready here. They are really excited for the session. Oh, that's great. That's great. So yes, it's 2:31, and without wasting much time, we can start with the session. So ladies and girls, this is your host Saloni who is speaking behind the camera. And in just a few seconds, you are going to meet your trainer. She is Divya Jain. Okay. So over to you, Saloni. You can start. Thank you so much, Lakshmi. And a few people were asking that how are you? I hope. So yeah, you can answer that. Yes. Okay, so just a second. Let me put Divya in the spotlight. And yeah. Okay, so hi everyone. This is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope that you all are really excited for this session. And today we are going to learn everything about having that no makeup look, because that is the most trending thing going on these days. So yes, before starting the session, there are just few things I want to tell you all about, and then we will move on to the session. ओके, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले बस कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम समझ लेंगे, उसके बाद हम अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे. So the very first thing is that we are going to have this session in both Hindi and English. Divya will be speaking in one language and I'll be translating the same in the other language. Okay? So दिव्या जो है हमारी ट्रेनर, जिसे आप अभी देख सकते हैं, वो एक लैंग्वेज में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगी एंड मैं वो सेम चीजें दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगी ताकि सबको हर चीज समझ में आ पाए. ओके. Second thing is the recording of the session will be there on YouTube forever. So if in case you want to come here and watch again and again, you can always come back to the channel and you can watch them here. Okay. तो ये जो सेशन की रिकॉर्डिंग है ये यहाँ यूट्यूब पे रहेगी एंड आप जब चाहें जितनी बार चाहें उनको यहाँ यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं. After that, all the products that Divya will be using have already been listed down in the description box. So if in case you want to buy those products, you can just go in the description box, click on the link, and you will be able to buy the product. And the same products have also been listed on the app. So if you want to go there, you will find the products there too. तो जो भी प्रोडक्ट्स दिव्या यूज करेंगी वो सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं. आप वहां पे जाकर के उनके लिंक चेकआउट कर सकते हैं एंड सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ऐप पे भी अपलोडेड है, आप ऐप पे भी चेक कर सकते हैं. Now the last thing is that if in case you want to ask any of the questions during the session, then you can write them down in the chat box. I will ask those questions to Divya and we will try to solve most of the queries here. Okay? तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है सेशन के दौरान तो आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं वो दिव्या से पूछूंगी और हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. Also, there's a PDF with this session which is already on the app, having few of the common questions like how do you choose the foundation and concealers. So these type of questions have already been answered in that PDF. So for these questions, you can always refer to that PDF there. Okay. So एक छोटा सा PDF भी हमारे ऐप पे अपलोडेड है जहाँ पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे कि कलर कंसीलर्स के बारे में या फिर फाउंडेशंस वगैरह के बारे में, तो वो सब आपको वहाँ PDF में उनका आंसर मिल जाएगा एंड आप वहाँ पे उनको चेकआउट कर सकते हैं. ओके. So yes, without wasting any time, let's get started with the session. Over to you, Divya.
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप सब लोग अच्छे हैं। सो मैं हिंदी में सेशन लूंगी और सलोनी उसी को इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेट करेंगी। आई विल बी टीचिंग द सेशन इन हिंदी एंड सलोनी विल बी ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश फॉर यू गाइस। सो सबसे पहले जब हम मेकअप करते हैं सो बेसिक इज CTM, दैट इज क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, प्राइमिंग। तो उसी से शुरुआत करेंगे। नो मेकअप लुक एक तरीके से बहुत इजी लुक होता है एंड दूसरे तरीके से इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लुक टू अचीव, क्योंकि आप सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लगाते हो एंड कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। सो ये कंसेप्ट होता है कि आफ्टर यूजिंग सारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी आपके चेहरे पे कुछ ना दिखे, दैट इज बेसिकली अ नो मेकअप लुक। सो जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट भी है ये। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद क्लीनिंग। तो मैं उसके लिए वेट वाइप लूंगी एंड अपने फेस को क्लीन करूंगी। एज यू ऑल कैन सी मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वॉश करके आई थी, फिर भी टी जोन में ऑलरेडी मेरे को स्वेट आना स्टार्ट हो गया है। तो प्रोडक्ट्स में अकॉर्डिंगली ही यूज करूंगी। सो आई एम जस्ट फर्स्ट क्लीनिंग माय फेस विद द हेल्प ऑफ अ वेट वाइप। सो सबसे पहले जब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस दैट यू डू बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप इज कॉल्ड एज अ CTM. This basically is a process of preparing your skin before starting the makeup here. So in the CTM process, the very first, that is C, stands for cleansing. So you are going to clean your face before starting the makeup. And for cleaning, Divya is using here a wet wipe. You can use any wet wipe that suits your skin type. Yes, Divya. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ PAC ब्रांड का। तो ये PAC ब्रांड का मॉइस्चराइजर है एक्वा ब्लास्ट। So after doing the cleansing, we are going to moisturize our face. The moisturizer that Divya is using is called as the Aqua Blast by PAC. The link is given in the description box. You can check that out. And when it comes to moisturizing, you can, if you're not comfortable with this one, you can use any moisturizer that suits your skin type or with what you are comfortable with. So you can see we are applying the moisturizer on our face. अभी हम अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू मेक श्योर that your skin is hydrated enough and you will not end up getting those white cast on your face. तो अगर आप अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं तो आपको जो व्हाइट कास्ट, जो ऐसे व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है ना आपका फेस, वो भी नहीं होगा, प्लस आपकी स्किन हाइड्रेटेड एंड हेल्दी भी रहेगी. ओके, सो आफ्टर मॉइस्चराइजिंग नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है प्राइमिंग। सो प्राइमर में यूज कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का, मेकअप स्टूडियो ब्रांड का ये प्राइमर है। So after doing our CTM process, we are finally going to start preparing for our base. The very first thing that we are using for it is called as a primer. The primer that here Divya is using is by Makeup Studio. So for Makeup Studio, we are just applying the primer here. तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं. हम लोगों ने अपना CTM प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है एंड अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपना प्राइमर. तो मेरा स्किन थोड़ा ऑयली है, तो जब भी मैं CTM करती हूँ और थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी या थोड़ा ज्यादा ऑयली या शाइनी दिख के आता है। बट दिस हैपेंस विद ऑयली स्किन, दैट इज कंप्लीटली ओके। ऐसे नहीं सोचना है कि मैंने प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लगाया या कुछ गड़बड़ हो गई या एनीथिंग। ऑयली स्किन में जब आप CTM करते हो, प्राइमिंग करते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो थोड़ा सा ऑयली दिख के आता है या थोड़ा सा ज्यादा शाइनी दिख के आता है, दैट इज नॉर्मल। ओके, सो मूविंग अहेड आफ्टर प्राइमर दैट आई एम गोइंग टू डू, अभी हम हमारे मेन मेकअप पे मूव हो रहे हैं। सो
I'm going to use all the products without using many products. So first हम लोग concealer से start करते हैं, under eyes conceal करते हैं. So for that I'm using this Krylon palette. Krylon का ये palette है, इसमें concealers है, color correctors है और lipsticks के भी कुछ shades है. It is demo 5. Krylon का ये demo 5 number यहाँ पे number mentioned है. डेमो 5 नंबर का पैलेट है ये. सो मैं इसमें से अपना शेड, अब कंसीलर कैसे सिलेक्ट करते हैं, इट शुड बी जस्ट योर स्किन शेड. जो आपका स्किन शेड है बराबर उसी से मैचिंग कंसीलर लोगे फॉर नो मेकअप लुक. तो ट्राई नॉट गोइंग वेरी फेयर और एनीथिंग. तो इसको मैं फिंगर से ही प्लेस करूंगी जस्ट जहां पे मेरी अंडर आई लाइन है उसी के ऊपर. और प्रोडक्ट भी मैं बहुत कम लूंगी एंड अच्छे से ब्लेंड करके उसको सेट करूंगी. ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर वी आर फाइनली मूविंग टू आवर मेकअप. So the very first thing that we have used here is a concealer. So the reason why we are using a concealer is to basically rectify and to remove all the all the pigmentation that we have around our face. When you are going for a no makeup look, what you need to make sure is that your concealer should be exactly of your skin shade. It should not be, basically when we buy concealers, they are basically, one or two shades lighter than our own skin tone. But when we are working with no makeup look, the concealer has to be exactly of your skin tone. Okay? एंड ये कंसीलर जो है इट इज नॉट अ वेरी हाई कवरेज कंसीलर, इट इज अ मीडियम कवरेज कंसीलर. जब आप नो मेकअप लुक करते हो ट्राई गोइंग फॉर मीडियम कवरेज प्रोडक्ट्स, एंड अगर आपके पास हाई कवरेज प्रोडक्ट्स है तो उनको कम क्वांटिटी में लो. Okay, so right now you can see that the concealer that we are using here is not very high coverage. Basically, that concealer is a medium coverage foundation because we do not want that our face would look like that. Yes, it has a lot of products on our face. So that is why whenever you're going for a no makeup look, always go for medium coverage products. Okay, there were a few questions. Yes. Okay, so there was a question that, ma'am, which moisturizer is best for the T-zone combination skin? अगर बहुत प्रॉब्लम है टी जोन में, जैसे मेरे को बहुत होता है, आई ओनली यूज टू मॉइस्चराइजर्स, दैट इज एक पीएससी का, एंड समर्स में ज्यादा मैं पीएससी यूज करती हूँ. आज थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने पीएससी यूज किया, नहीं तो फिर द अदर मॉइस्चराइजर दैट आई यूज इज निविया सॉफ्ट. सबसे बेसिक मॉइस्चराइजर है और वो सारे स्किन टोन को सूट करता है, एंड जिनका बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन है, it is really a very good moisturizer. Basic है पर बहुत अच्छा है. Okay, so there's one more question. So there's a question that, ma'am, for moisturizer we should use 2 products. Moisturizer we should use 2 products. Why? I didn't get it. I don't know. Mansa, can you please ask a question once again? Like, can you please reframe it once? So then can we just continue थोड़ा सा ये question? Yeah. Okay, so next I'm moving ahead is with the foundation, and जो foundation मैं use कर रही हूँ, this is also from PAC. ये PAC का ही foundation है, Spotlight Liquid Foundation, and the shade that I'm going to use is Beach Puff. 10 नंबर का शेड है. They keep changing the number, so name हमेशा सेम होता है, Beach Puff. एंड फाउंडेशन भी मैं बहुत कम लेने वाली हूँ. यूजुअली वी यूज अ गुड क्वांटिटी ऑफ फाउंडेशन, बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी लेस क्वांटिटी. So next what we are going to use is a foundation. So the foundation that we are using here is again by PAC in the shade Peach Puff. So we are going to use very less quantity of it because we do not want that we do not want lot of products on our face. Okay, so अभी हम use कर रहे हैं PAC का foundation
जिसका शेड है पीच पफ। एंड आप इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। आप देख सकते हैं दिव्या ने भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज किया है, थोड़ा ही प्रोडक्ट लिया है एंड उसी में शी इज डूइंग द होल मेकअप। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बहुत प्रोडक्ट्स आप ना यूज करें जब आप नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हैं। ऑल्सो ट्राई यूजिंग, ये ड्राई है, ये जो स्पंज पे यूज कर रही हूँ मेकअप के लिए ये ड्राई है। नो मेकअप लुक के लिए स्पेशली मैं इसी स्पंज को प्रेफर करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर्स। not the beauty blender or a brush. This is a beauty blender जो हम damp यूज करते हैं। मैं इसको भी कम प्रेफर करती हूँ और ब्रशेस को भी कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रोडक्ट ज्यादा लग गया तो ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके सेट कर देता है। ब्यूटी ब्लेंडर एंड ये एज इट इज रखता है कवरेज, ज्यादा रिड्यूस नहीं करता है। So I prefer using a dry sponge for this makeup sponge. Okay, so usually when we blend our makeup, what we do is we use a very damp beauty blender, or we use damp sponge, or we use brushes. When it comes to the no makeup look, Divya usually goes for a dry sponge. The reason why we use a dry sponge is that it will absorb extra product and you will get a very minimal base, and it will give you a very natural effect because you do not have a lot of product on your face, but you still have covered everything. So as a result, you will get a very minimal base here. जब Uh, पे Deepa, it is जस्ट वन सेकंड, सॉरी yeah, sure. जब आप चेहरे पे करते हो तो इसको डैप करोगे एंड जैसे ही आप गले पे आते हो यू कैन स्वैप इट। Okay. सो जब भी हम अपने फेस पे काम कर रहे होंगे तो आपने अभी देखा होगा दिव्या अपने स्पंज को लेकर के ऐसे डैप डैप करके मोशन में यूज कर रहे थे, राइट? क्योंकि हमें वहां पे प्रोडक्ट सेट करना है। जब हम अपने गले पे आते हैं तो अगर आप डैप डैप करोगे तो कुछ होगा नहीं। आप ऐसे हल्का सा नीचे की साइड ऐसे उसको करते हुए ब्लेंड करोगे। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने कंसीलर बहुत कम यूज किया है, फाउंडेशन भी बहुत कम यूज किया है। एंड ये जो फाउंडेशन मैंने यूज किया, कंसीलर भी मैंने मीडियम कवरेज का यूज किया एंड फाउंडेशन भी मैंने मीडियम कवरेज का यूज किया है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पे स्पॉट्स है या फिर जो अंडर आईज है वो थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा और फाउंडेशन मैंने हाथ पे लिया है, एकदम थोड़ा सा, एंड जस्ट जो अंडर आई की लाइन है और जो स्पॉट्स है उस पे जस्ट लाइटली प्रोडक्ट लगा के मैं फिर से डबल ब्लेंड करूंगी। नॉट एवरीवेयर, जस्ट वेयर यू हैव स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस और अंडर आई, बस उसी एरिया को आप रीबिल्ड करो। So what you can see here is that we have used a concealer and the foundation which were of medium coverage. When you're using something of medium coverage, you obviously are not, you will not be able to hide everything that is on your face. So right now you can see, no, there were all, you can see all her dark spots, or you can see her under eye area. So what we are going to do for hiding all these things is we are going to take little bit of foundation once again, and we are just going to double blend it. That means wherever you can see that there are some kind of pigmentation, you're just going to apply the product right there, okay? Not everywhere, but just there. And then you are just going to blend it there so that you hide everything there. अब सेकेंड टाइम जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो उसके बाद क्या करना है, लूज पाउडर लेना है, लूज पाउडर लेना है आपको। मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर फ्रॉम द ब्रांड मिस क्लेयर, शेड इज TL13, TL13 ब्रांड मिस क्लेयर। ये सारे स्किन टोन को जाता है, ये जो शेड है पर्टिकुलरली लूज पाउडर का, डार्क टू फेयर हर स्किन टोन में ये सूट होता है। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज टैग अंडर आईज को डैप करूंगी एंड इमीडिएटली उसको मैं सेट करूंगी। So right now you can see what we are doing is
we have just tapped the products, like we have blended our foundation here, and just after blending our foundation, we are setting it in using the loose powder. Now, the loose powder that the we're using here is by Miss Claire in the shade number TL13. Okay. And the good thing about this loose powder is that TL13 usually goes with almost all the skin shades, being it the darker one or being it the lighter ones. So you can use this shade on almost all skin tones. ओके सिर्फ मैंने मेरे अंडर आईज सेट किए हैं, बाकी पूरा मेकअप एज इट इज रखा है मैंने, क्योंकि एंड में मेरे को अंडर आईज में क्रीजेस हो जाते हैं क्योंकि मेरे अंडर आईज थोड़े हैवी है। अगर आपको उतने ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। जब एंड में हम पूरा बेस सेट करेंगे तभी भी एक बार सेट कर सकते हो। जस्ट बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े ज्यादा है, मैंने अभी एक बार सेट कर दिया है उनको। Okay. So if in case, like you can see that Divya has little dark, what you say, dark pigmentation or dark circles around her eyes. But if in case you have very light dark circles, then what you can do is you can use this, you can use this, uh, you can do this process later on. Okay, when you in the final step, that you can set this all in the final step. But since she has little dark circles, that is why she has set the base near her eyes right now only. Okay. Yes, Divya. तो नेक्स्ट मैं कर रही हूँ, हमें ब्लशर चाहिए चेहरे पे, तो वो भी एकदम न्यूट्रल चाहिए, एकदम लाइट चाहिए। तो ये मेरा पीएससी का लिप पैलेट है। y'all can take, if you have powder blushers में भी light shades है, like peach shade और a nude shade blushers आते हैं, वो है तो वो ले सकते हो। क्रीम में भी आपके पास ब्लशर्स है, या फिर सिंपली जो लिपस्टिक आपके पास है, लिक्विड हो, क्रीम हो, एनी लिपस्टिक्स या फिर स्टिक हो, चैपस्टिक्स हो, एनीथिंग यू ऑल हैव, you all can work with that. So मैं इसमें से एक थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का ही शेड ले रही हूँ। I don't want a very heavy blush on, so I'm just taking it in my finger and इस तरीके से मैं अप्लाई करी in a L, reverse L. So you can see right now that we are doing the blush part here. Now, when you're working with a no makeup look, you want to keep your blushes also very neutral. So for that, you can go with any neutral shade of pink or reds, whichever suits your skin. Or what you can do is you can also use any of your lip palettes, or you can use any of your lipsticks. Anything that is very neutral can be used here as a blush. Okay. So you can see, and the way that we have applied it is ki we applied it just before in a shape of inverted C here. So can you all see it light flush है skin में, but it is not looking like a proper blusher application. मैंने blush लगाया है पर वो एकदम natural ही मेरी skin में blended हुआ है. So you can see that she has applied the blush, but it's not looking like that. Yes, she has applied a lot of blush or something like that. You can see that it has blended very well in the skin and looks like just that there is this rush of blood there. Not like you have applied something. We have to blend very well, and we have to use very, muted tones. That is the reason why we are using very muted tones here. अगर आपके हाथों से ब्लशर ज्यादा लग जाता है, सिंपल ट्रिक है, मैं इस साइड से ब्लेंड कर रही थी, मैं क्या करूंगी, जहां पे प्रोडक्ट नहीं है वो प्लेन साइड से एक बार और डैप कर लूंगी, तो प्रोडक्ट मेरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड अगर ब्लशर ज्यादा लगा है तो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड फिर वो नॉर्मल दिखेगा। So if in case you by mistake apply the blush or anything very, a lot, and you feel like that, yes, it is a lot of blush or something like that, what you can do is from the part where you were blending it, opposite to that part, that means where you do not have any product on your sponge, you're going to use that side of your sponge and you're just going to dab it again. What will happen is that the excess product will be absorbed by the sponge and you will get a very muted look.
ओके Yes, Divya. नेक्स्ट आई शेडो करियो। आई शेडो के लिए भी मैंने जो ब्लशर के लिए मैंने शेड यूज किया है वही लेके मैं सिर्फ अपने लिड्स पे लगा रही हूँ। आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर ये आई शेडो फ्लफी ब्रश है, इससे मैं ब्लेंड करूंगी। जितना शेड चाहिए उतना अप्लाई करूंगी एंड देन आई जस्ट ब्लेंड इट ऑल ओवर माय आई। So you can see here that the same shade that we use for our blush, we have used the same shade for our eyes also. So what you can do is you are just going to take that shade, apply it on your eyelids, and either using your fingers or using your eyeshadow brush or using your sponge, you can just blend it in. डॉली मॉइस्चराइजर में बोरोप्लस बहुत ज्यादा हैवी हो जाता था। इफ इन केस आपकी बहुत ड्राई स्किन नहीं है, प्लीज बोरोप्लस मत यूज करिए। इंस्टेड आप कोई एक नॉर्मल हैवी जो मॉइस्चराइजर आता है वो यूज करिए, बिकॉज बोरोप्लस काफी ज्यादा ऑयली होता है। ओके तो अगर आई शेडोज भी ज्यादा लगे तो उसको भी आप इस तरीके से डैप करके रिमूव कर सकते हैं। मैंने बहुत कम लगाया था, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए डैप किया। एक्चुअली आई हैवंट रिमूव्ड मच शेड, आई एम जस्ट शोइंग इट टू y'all, y'all can do this. ओके सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं इज आवर आईब्रोज। सो फॉर आईब्रोज ओके सॉरी नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो है पूरा बेस हमारा सेट कर लेते हैं। सो बिफोर डूइंग दैट एक बार फुल फेस को चेक कर लेना है कि कहीं पे ब्लेमिशेस दिख रहे हैं क्या। अभी मेरे अंडर आईज मेरे को परफेक्टली ओके लग रहे हैं। जो मैंने मेकअप भी अप्लाई किया है दैट इज लुकिंग ओके। कहीं पे भी कुछ स्पॉट्स नहीं लग रहे हैं। बिफोर सेटिंग योर मेकअप मेक श्योर सब कुछ बराबर है या नहीं है। सिर्फ मेरी लास्ट लाइंस मेरे को दिख के आ रही है तो मैं उनको फिर से एक बार डैप करूंगी एंड देन I'll go in and set my entire base. So what you can see right now is that Divya is setting her base. So for setting her base, she is using the same Miss Clay's loose powder in the shade number TL13, and we are just brushing all our face using that TL. So just remember that when you're going to set your base, make sure that everything is done. Okay, like you know that yes, you are absolutely satisfied with your base. You know that everything is done. You've applied everything, and if you are satisfied, then only do your set your base. डॉली आइस के नीचे तो अभी कुछ नहीं लगाया, बस हम लोगों ने कंसील किया था, फाउंडेशन अप्लाई किया है बस। एंड ऊपर हम लोगों ने आइस पे जो हम लोगों ने ब्लश यूज किया था वही सेम हम लोगों ने अपने आईलिड्स पे कलर यूज किया है। There was a question in the beginning that somebody was asking that मैम हम सिरम को मॉइस्चराइजर के पहले यूज करते हैं या बाद में? बाद में यूज करते हैं। Okay. So yes, whosoever asked that question, if you are working with the serums, always use them after your moisturizer. Moisturizer के बाद आप यूज करोगे सीरम। सबसे पहले आप सीटीएम ही करोगे, दैट इज क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग। ये हो जाने के बाद ही जो भी प्रोडक्ट्स आपको यूज करने स्टार्ट करने हैं आप कर सकते हैं। सो मेनी टाइम्स क्या होता है, बीबीसीसी क्रीम लगा लो ना तो भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है। इफ यू ऑल वांट टू स्किप फाउंडेशन एंड आपको अगर फाउंडेशन स्किप करना है तो बीबी या सीसी क्रीम यूज कर लो एंड सिर्फ अंडर आईज एंड ब्लशेस लगा दोगे तो एंड फिर सेट कर दोगे तो भी ऐसा फिनिश आ जाता है कईयों के चेहरे पे। मेरे पे नहीं आता है बिकॉज आई हैव गॉट स्पॉट्स एंड अंडर आईज एंड सब कुछ है, तो आई नीड टू यूज थोड़ा सा तो भी फाउंडेशन। पर अगर आपकी स्किन नेचुरली बहुत अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है, so you all can skip the foundation also for the no makeup look. Okay,
So sometimes what happens, no, few people do not have lot of pigmentation or dark circles on their face. So in that case, what you can do is you can skip your foundation part. So instead of foundation, you can use either the CC cream or the BB cream. You can just apply your, you can do your CTM process. Then you can apply your CC cream, do your under eyes, apply some blush, lipstick, and you'll be done. ओके सो नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ दिस इज अ नो मेकअप लुक तो मैं लिपस्टिक नहीं यूज करने वाली हूँ दिस इज शील्स का क्रेजी लिप्स का मेरा लिप बाम है इट हैज अ टिंट ऑफ पिंक अच्छा डार्क पिंक है ये तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ लिप बाम जो भी आपको शेड पसंद हो उस शेड में आप लिप बाम यूज कर सकते हो अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो जस्ट फॉर इंस्टेंस आई विल शो इट टू यू ऑल हाउ टू डू दैट इसी में से मैं थोड़ा सा मेरे हैंड पे करके दिखा रही हूँ यू ऑल कैन यूज दिस स्टेप क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिप बाम लगा लिया है सो आई हैव टेकन दिस डार्क मैरून ले रही हूँ मैं मेरे हाथ में इसमें से अगर मेरे पास कोई लाइट शेड की लिपस्टिक नहीं है लिप बाम नहीं है कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगी टू मेक इट अ वेरी न्यूड शेड काइंड ऑफ अ थिंग सो ओके दिस इज अ डार्क लिपस्टिक एंड हम लोग नो मेकअप लुक में जा रहे हैं तो इसके ऊपर फाउंडेशन या कंसीलर जो भी है आपके पास वो लोगे एकदम थोड़ा सा लेना है बहुत ज्यादा नहीं लाइटली डैब इट ऑन दिस एंड फिर दूसरे फिंगर से इसको डैब कर दो दिव्या हल्का सा ऊपर करेंगे हाँ अभी तो कैन यू सी कितना प्यारा शेड मिला है हमें या तो आप ये शेड को अपने जिस फिंगर से आपने डैब किया ना वहीं से पिक करके इस तरीके से लिप्स पे लगा लेना मिक्सिंग हमेशा पैलेट पे या हाथ पे करना डायरेक्ट लिप्स पे मत करना नहीं तो आजू बाजू में लग जाएगा आप उसको एक बार ब्लेंड कर लिया पैलेट पे या फिर हाथ पे फिर इस तरीके से लगा लेना या फिर ब्रश से भी लगा सकते हो any which way that you are comfortable you all can do it okay just a second Divya yeah. Okay just a second huh? So you can see that what okay so you can see कि if you do not have since we are going for a very no makeup look what we are doing is we have used a lip balm here. Now if you can use any lip balm that you're comfortable with, like you can go with pinks, you can go with red, you can go with browns, like according to your skin type. For example, pink and reds don't suit my skin tone, so I always go with the brown shades. So you can see that what shade of lip balm is suiting your skin, and then you can go according to that one. And if in case you do not have, a lot of lip balms, what you can do is, and you want to go to very, neutral or very nude shade, what you can do is you can just take any of your shade, any of your lipstick or anything like that and blend it with the concealer or the foundation to just tone it down a little. Once you're done with toning, what you will see, you will get a very beautiful shade. And don't do this mixing process on your lips, okay? Never do that on your lips. Do it on your hand or maybe on a palette. Once you're done mixing and you're satisfied with that color, just use it on your lips and you will get that muted and very normal shade without getting any new products. We have saved money also, ladies. हमने पैसे भी बचा लिए अपने नया शेड भी क्रिएट कर लिया. Okay. Okay. So there was a question. There are like few questions here, Divya. Can we take them now? Yes, yes.
मैं Okay. आईब्रोज करते करते ले लूं, चलेगा? एक बार आईब्रोज कर लेती हूँ थोड़ा सा, गिव मी 5 हाँ minutes. हाँ 5 minutes में मैं थोड़ा सा कवर करती हूँ, एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस टुगेदर. इज दैट ओके? या श्योर, वो भी चल जाएगा. आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो ओके. पीओवी पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन ले रही हूँ. यूजुअली आई मिक्स थोड़ा सा ब्लैक इन माय आईब्रोज, बट अगेन बहुत सब चीज सेटल होनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें ब्लैक नहीं मिक्स करूंगी ज्यादा. एंड जस्ट पहले ब्रश से मैं अपने आईब्रोज ब्रश कर रही हूँ, एंड देन सिर्फ ये पहले अपर लाइन, देन द लोअर लाइन, एंड फिर एंगल. एकदम तो तरीके से फिल इन कर रही हूँ मैं. आई डोंट वांट देम टू गो वेरी डार्क. इफ यू ऑल सी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम नेचुरली जितना फिल इन हो रहा है उतना ही, एक ही बार लेके प्रोडक्ट. so you can see that now we are doing the brows. So when it comes to the brows, you are going to keep the brows also very muted, because your face is very muted, and if you keep the brows not that muted, it will just not look very nice. So what we are doing here is we have taken a shade which is exactly like our brow shade, maybe a light brown or any shade that is exactly like your brows. And once you're done with that, you are first going to brush your brows. Once you have brushed it, then you are going to fill it in. Do not overfill them, just fill them a little so that they would give a very natural effect. Okay? अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या होता है, हम काजल नहीं लगाते नो मेकअप लुक में, लाइनर नहीं लगाते, ये सब चीजें नहीं लगाते हैं, तो नीचे का एरिया है ना बहुत ही ज्यादा ब्लैंक दिखाई देता है, डल दिखाई देता है. सो व्हाट डू वी डू फॉर दैट इज आई जस्ट टेक अ शेड ऑफ ब्राउन, एनी आई शेडो पैलेट. मैं मॉर्फी का पैलेट ले रही हूँ. अगर आपके पास पैलेट नहीं है आई शेडोज के, तो आप आईब्रो पैलेट का भी ब्राउन ले सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ओके. एनी शेड ऑफ ब्राउन विद अ वेरी स्मॉल ब्रश, एक छोटे से ब्रश में आप कोई भी ब्राउन का शेड लोगे, एंड जस्ट आपके लोअर काजल लाइन, जो लोअर वाटर लाइन होता है ना, उसके नीचे आप थोड़ा सा उसको फिल इन करोगे, जस्ट फॉर द इफेक्ट. So right now you can see what we are doing is that when you're doing a no makeup look, no, we do not use any kind of liner or kajal or anything like that, because of which the lower lash line looks very, it looks very dull, and we do not want that to happen. So what we are going to do is you are going to take any of your palettes. You are going to take a very light brown shade, take it in a very small brush, and just apply it near your waterline. Okay. And in this way, what will happen? You will not get that very empty looking space there. Okay. सेम ऑन द लाइनर, जहां पे आप लाइनर लगाते हो ना, अपर लैश लाइन के ऊपर भी आप सेम प्रोसेस करोगे. इट शुड नॉट बी वेरी विजिबल काइंड ऑफ अ शेड. तो जैसे अभी हम लोगों ने नीचे किया था ना, वैसे ही हम लोग ऊपर अपने जहाँ पे अपना लाइनर अप्लाई करते हैं वहां पर करेंगे. What we did just below our waterline, we are going to do this. We are going to repeat the same process on our upper eyelids also. So remember, you're not going to use a shade that is very much visible. Just use a shade which is very muted and would just blend in with your skin. नेक्स्ट इज मस्कारा. सो मस्कारा लगाने के लिए भी कोई भी आपका पुराना मस्कारा होगा जिसका वैन ड्राई हो चुका है, वो ले सकते हो. नहीं तो फिर ऐसा एक मस्कारा वैन मिलता है आपको शॉप्स में, यू कैन बाय दैट आल्सो. पुराना मस्कारा जिसका ब्रश ड्राई हो चुका है, नहीं तो फिर एक ऐसा मस्कारा वैन हाथ में रखना. देन क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट अप्लाइंग द मस्कारा.
पहले ऊपर की तरफ एंड फिर नीचे से रोल करके लैशेस को ऊपर उठाओ, इस तरीके से रोलिंग मेथड से. So here you can see that now we are applying our mascara. The best way to apply your mascara is to first apply the mascara from above. Once you have applied the mascara from above, then you finally are going to apply it from the below. When you're applying it from the below, always go in the round motion so that you could uplift your brows. I'm sorry, you could uplift your lashes. और थोड़ा सा लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर लेना, बिकॉज काजल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मस्कारा तो भी होना चाहिए. मेरी लोअर लैशेस ही बहुत कम है तो शायद से दिखाई ना दे, पर जिनकी होगी उसमें बहुत ही प्यारा दिख के आता है, लाइक दिस. एंड देन फॉर द नेचुरल इफेक्ट क्या होता है, मस्कारा जब लगाते हैं ना तो अपने लैशेस एक दूसरे से चिपक जाते हैं, पर नेचुरली उसको ये करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, मस्कारा लगाने के बाद इस ब्रश से बस कर्ल कर लो अपने मस्कारा लैशेस को, सॉरी. So what you can see here is after you apply your mascara, you will see that your lashes might get stuck to each other. So in order to avoid that, what you're going to do is you can either use a mascara wand or you can use that stick that you get from the mascaras, from any of your old mascaras. You can reuse that stick. And you're just going to, after applying the mascara, you are just going to use it again on your lashes just in order to remove, to just separate all of them from each other. You can see that we are repeating the same process on the other lash also. दूसरे लैश पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं. हम लोगों ने मस्कारा अप्लाई किया, फिर एक मस्कारा वॉन्ड लेकर के उसको वापस से ब्रश कर दिया. अच्छा, मैंने ये बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है. जब खुद का मेकअप करते हैं ना, व्हाट हैपेंस, अपना राइट हैंड ज्यादा, अगर आप राइटी हो तो अपना राइट हैंड ज्यादा वर्क करेगा, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड ज्यादा वर्क करेगा. तो इस साइड तो बराबर मस्कारा लगा देते हैं एंड इस साइड लगाते वक्त ना दे टेक इट लाइक दिस, तो ना नाक पे और आजू बाजू में मस्कारा लग जाता है. हमेशा एक तो ऐसे रिवर्स यूज करो, अगर आपको लेफ्ट हैंड से नहीं जम रहा है तो एक तो ऐसे रिवर्स यूज करो, नहीं तो आपका दूसरा हैंड यूज करो. डू नॉट यूज द मस्कारा लाइक दिस. आपका ये एरिया पे चिपक जाएगा, आपका पूरा मेकअप हो चुका है एंड देन वो खराब कर दोगे आप. मस्त सिर्फ इतना छोटा सा मिस्टेक, एंड ये मैक्सिमम लोग ना जिन्होंने किया हुआ है ना ये चीज, वो अग्री भी करेंगे. आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग दिस. Okay, so there's one mistake that almost everybody makes, and I realize that I do it too right now. So what you're going to do is, instead of using your mascara like this, that you hold your mascara in your right hand and then you go straight towards your left eye. Don't do that. Use it in the reverse motion. By the way, can you please show it once again to them? Yeah, sure. So instead of using your mascara like this, don't do this. Use it like this so that you don't end up getting the mascara on your nose. Or you can use your left hand also, which is very difficult. So you can just use your right hand and you will not get your mascara on your nose or anywhere. Okay. So next हम लोग करेंगे that is highlighter. ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है. बहुत लोगों को नो मेकअप लुक में हाइलाइटर नहीं पसंद है, और मेरे को हाइलाइटर बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई डू नॉट स्किप दिस स्टेप. बट बहुत कम लगाना है. ये रोज गोल्ड शेड में हाइलाइटर है फ्रॉम ब्रांड ग्लैम 21. आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो. मेरे को बहुत थोड़ा सा चाहिए तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अपने हाथ के पीछे के साइड पे लूंगी. दिस इज वेरी पिगमेंटेड, तो मैं डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर रही हूँ इसको. ये स्टेप फॉर नो मेकअप लुक, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. एंड जो मेरा चिकबोन है बस उस पे लगा के फिंगर्स से ही मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ. बहुत ज्यादा हाइलाइटर नहीं कर रही हूँ, जस्ट अ वेरी लाइट.
So you can see right now that we have applied little bit of highlighter also. Now remember that this step is very optional. If you want to do it, that is, you can. If you do not, you can skip this step. This is a very optional and personal choice to make. So what we are doing here is that we have taken very small amount of highlighter, not a lot of it, just a very small amount of it, and have applied it on our cheekbones. Okay? And you're not going to use a lot of highlighter also. Okay? थोड़ा सा मैं मेरे ब्रो बोन पे भी लगा रही हूँ. आई लव हाइलाइटर. मैं ना मेरा बस चले तो मैं पूरा हर जगह पे हाइलाइटर यूज करूँ, बट दिस इज अ नो मेकअप लुक. तो जहाँ पे एकदम बेसिक्स होते हैं वहीं पे मैं अप्लाई कर रही हूँ. The highlighter that Divya has used here is by Glam 21 in the shade Rose Gold. जो दिव्या ने हाइलाइटर यूज किया था वो था रोज गोल्ड शेड ग्लैम 21 का highlighter number. Divya, is there any highlighter number to it? Yeah, it has some number. Just 1 second. 05. Okay, it is 05. Okay, so your no makeup look is complete. अब मैं makeup fixer से fix कर दूंगी. No makeup look को makeup fixer से हर बार fix करने की जरूरत नहीं है, but because मैं sweat बहुत ज़्यादा करती हूँ and मेरी skin भी oily है, जिनकी skin बहुत oily है and जो बहुत ज़्यादा sweat करते हैं, कोई भी makeup करेंगे तो please makeup fixer apply करो. For others, they can just go like this. Okay. So if you sweat a lot and if you have an oily skin, then you always need to use a makeup fixer, even if you're going for a no makeup look. But if you have a dry skin or maybe a combination skin where you do not sweat a lot, in that case, we have already set our base using the loose powder. So you can just leave it like that and you can go out. But if you sweat a lot, do not go out without a makeup fixer. तो ये अपना लोग कंप्लीट हो चुका है. किसी को कोई क्वेश्चन है? अब we can take question. Okay, so we have got a lot of questions here. Just give me a minute. मैं सबसे ऐसे ऊपर जाऊंगी उसके बाद हम questions लेना start करेंगे. Okay. Okay, so there's a question that, ma'am, what is the difference between where is compact used and where is loose powder used? कॉम्पैक्ट यूजुअली अगर बहुत ज्यादा हेवी बेस करते हैं या फिर यूजुअली ब्राइड्स में या हेवी मेकअप्स में जहाँ पे मेकअप को बहुत मतलब प्रोडक्ट्स भी काफी सारे यूज किए जाते हैं, हाई कवरेज प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, प्रिफर्ड है. एंड लूज पाउडर इज अ वेरी फाइन पार्टिकल. तो नो मेकअप लुक या फिर ऐसे थोड़े से बेसिक मेकअप्स हो तो आप लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, बट लूज पाउडर कैन बी यूज आल्सो फॉर ब्राइडल्स अगर अच्छी क्वालिटी का है. तो मैं ज्यादा लूज पाउडर ही प्रेफर करती हूँ. इवन आई हैव दिस कॉम्पैक्ट, मैंने सोचा था आज मैं यूज करूंगी. मैक का है ये NC35 and NC40 is the shade that I use. Okay, video has gone off. Yeah. The way your video just went off. One second. Just a second, guys. अभी दिव्या का वीडियो, हाँ अभी आ गया. निकिता, जो लिप शेड था ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिपस्टिक नहीं यूज किया है. वी हैव जस्ट यूज्ड a lip balm here in shade pink. Okay, and if you want to use any kind of lipstick, then you can go with any kind of nude or plum kind of shade. Marjana, for your questions, we have used Derma Colors makeup fixer here. Okay. Kaloni, Yeah. Oh, sorry. Just a sec. Yeah. हाँ अभी बस हो गया था. आई थिंक इतने पर जाएगा. Yeah, just a second.
Okay. Okay. So there are few more questions. Just give me a minute. Okay. So there was a question that, ma'am, what is the order of serum and primer? प्राइमर पहले सिरम बाद में, दैट इज व्हाट आई प्रेफर. काफी सारे आर्टिस्ट सिरम पहले प्राइमर बाद में यूज करते हैं. मेरा लॉजिक उसके पीछे ये है, प्राइमर बेसिकली आपके मॉइस्चराइजर को लॉक कर देता है एंड सिरम आपके फेस को नेचुरल शाइन ऐड करता है. तो पहले मैं मॉइस्चराइजर को मेरे लॉक करना पसंद करती हूँ ताकि उसके बाद जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो वो मेरी स्किन को डैमेज नहीं करेगा. एंड प्राइमर से ऑफकोर्स वो ब्लेंडिंग एंड फिनिशिंग में ज्यादा बेटर होता है. दैट इज व्हाई व्हाट आई प्रेफर इज फर्स्ट प्राइमर एंड देन द फेस सिरम. Okay. डी जैन, फॉर योर क्वेश्चन, कंसीलर का ये था कि आप कोई भी एक शेड ले सकते हो, कोई भी डार्क शेड लीजिए, उसमें कंसीलर या फाउंडेशन दोनों में से कोई भी एक चीज आप मिक्स कर दीजिए, तो उससे आपका जो शेड है वो थोड़ा सा म्यूट डाउन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. देन आप उसको यूज कर सकते हो. दिव्या, आप अपना जो लूज पाउडर एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ, this the packaging Misclair TL30. जो लूज पाउडर्स में ज्यादातर यूज करती हूँ दैट इज वन दिस और मिसक्लेयर का है. दूसरा ये क्राइलॉन का TN9 है. ये भी सारे स्किन टोन्स को जाता है. एंड तीसरा फॉर ब्राइड्स व्हिच आई रियली प्रेफर इज फ्रॉम लॉरा मर्सी. अगर हेवी बेस कर रही हूँ मैं तो ये लॉरा मर्सी का. ऐसे मेरे पास 3 हमेशा ही होते हैं वैनिटी में. इन एडिशन टू दैट मेरे पास स्टार्स का है, PSC का है, फिर मैक के कॉम्पैक्ट्स है, वो सब है. बट ये 3 मेरे फेवरेट्स है. रीजनेबल में ये दो. एंड फॉर द ब्राइडल्स एंड हेवी थिंग आई गो फॉर लॉरा मर्सी. Okay. So there is one more question. एक सेकंड. डॉली खान मैम, क्या आप प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर सकते हैं? मतलब ऑयली एंड ड्राई स्किन के लिए क्या यूज करना है, बट लाइक मॉइस्चराइजिंग में या प्रोडक्ट्स, मतलब किस चीज के लिए? ओके, सो देयर वाज अ क्वेश्चन, दिव्या, कि मैम कैन दिस ट्रिक बी आल्सो यूज्ड फॉर द लिक्विड लिपस्टिक्स एज दे ड्राई वेरी सून? कैन व्हाट बी यूज फॉर यस यस यस. लिक्विड लिपस्टिक पे भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. मेरे हाथ में कोई होगी तो मैं करके दिखा दूंगी. ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे अभी मैंने लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं निकाले हैं मेरे, कोई भी आज के मेकअप में नहीं था तो लिक्विड रिक्वायर्ड. बट लिपस्टिक लिक्विड को भी आप यहाँ पे रिमूव करिए, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन या कंसीलर मिक्स कर लीजिए, वो शेड लाइट हो जाएगा एंड फिर आप यूज कर सकते हो. लिक्विड में भी परफेक्टली वर्क करता है. Okay. So somebody is asking that, ma'am, the time I apply mascara, it gets on under my eye skin. How can I remove it? Because when I try to remove it, my makeup gets spoiled. मतलब आपके चेहरे पे लग जाता है मस्कारा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब जैसे लगाते हैं ना, लैशेस पे लगा दे तो लगाते लगाते से आँख के पीछे या तो लग जाता है या फिर मतलब ऐसे लग जाता है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? ट्रिक फॉर दैट, अभी मेरे पास ईयरबड नहीं है. ईयर क्यों आता है ना, ईयरबड जिससे अपन कान साफ करते हैं, कॉटन लगा रहता है उसके, ऐसी स्टिक होती है एंड कॉटन लगा रहता है. सो लेट योर मस्कारा ड्राई एंड फिर लेट्स से यहाँ पे लगा है, वहां पे सिर्फ मैं प्रेस करूंगी, उसको रोटेट करूंगी, रिमूव करूंगी. अभी ये कॉटन नहीं तो ऑफकोर्स मेरे इसको डिस्टर्ब कर रहा है ये. अगर कॉटन रहता है तो आपका बेस डिस्टर्ब भी नहीं होता है एंड मस्कारा रिमूव हो जाता है. ऐसे बस टच करना है, हल्का सा रोटेट करना है एंड रिमूव करना है. Okay, so somebody is asking कि मैम लूज पाउडर की जगह पे हम कॉम्पैक्ट या जो पॉन्ड्स वगैरह का लूज पाउडर आता है वो यूज कर सकते हैं? पॉन्ड्स का लूज पाउडर इज बेसिकली पॉन्ड्स का पाउडर ओनली. मत यूज करना पॉन्ड्स का, बिकॉज उसके पार्टिकल्स काफी कोर्स होते हैं. कोर्स मतलब थोड़े थिक होते हैं, तो वो थोड़ा केकी लुक देता है आपको. एंड कॉम्पैक्ट, यस यू ऑल कैन यूज कॉम्पैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने आज अपने लिए रखा ही था
बट देन मेरा लूज पाउडर से सेट हो गया तो आई डेंट यूज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट आप यूज कर सकते हो, बट देन ऑल्सो इट डिपेंड्स आप कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांड्स का, जैसे लॉरियल का एक बार मैंने कॉम्पैक्ट ट्राई किया था, इट हैड अ वेरी थिक पार्टिकल्स, तो वो फिर वापस से केकी लग जाता है आपका मेकअप. मैक का अच्छा है. Okay. So there was a question that, ma'am, can you please give some tips for hooded eyes? हुडेड आईज, ये तो हुडेड आईज वाले तो हमेशा ही प्रॉब्लम ही है. देयर इज नो ट्रिक टिप, कुछ नहीं है, आपके आईज का शेप वैसा है. और आई मेकअप नहीं दिख के आते हैं. आई हैव डन ब्राइड्स एंड एवरीथिंग विद हुडेड आईज. मेरी कई बार यहाँ पे क्लास में भी एक आधी मॉडल आई थी जिनका हुडेड आईज था एंड नहीं दिखाई देता है. बट देयर इज नो ट्रिक और टिप. जस्ट एक सिंगल चीज जो मैं करती हूँ, मेरा अगर कोई प्रीवियस एक ब्राइडल ही मैंने किया था हुडेड आईज का ऑन द क्लास इटसेल्फ, ऑन द पंखुड़ी क्लास इटसेल्फ, तब मैंने दिखाया था. ये जो अपना आईब्रोज होता है ना, तो यहाँ का जो नीचे से ऐसे कर्व में आपको कंसील करना है. मतलब बेसिकली आप आपके हाफ आईब्रोज को कट कर रहे हो कंसीलर से एंड उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ग्रो करना है, तो ये एरिया आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है. दैट इज द मैक्सिमम थिंग दैट यू कैन डू. ये मैं अभी प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकती हूँ, मैंने उस क्लास में करके दिखाया था ये चीज कि आप किस तरीके से आपके आईब्रोज को कम कर सकते हो. कोई पतला ब्रश लेने दो. ओके, आई होप दिस. तो बेसिकली ये जो आईब्रोज है ना, यहाँ से नीचे से लेके ये कर्व में मैं ज्यादा कंसीलर भरूंगी, कर्व को मैं ऊपर पिक करूंगी, यानी इस तरीके से दिखेगा कुछ. इस तरीके का कर्व आ जाता है नीचे से जब मैं कंसील करूंगी नेचुरली. एंड देन यू कैन डू योर आई मेकअप. तो आपको नीचे स्पेस नहीं मिल रहा है, ऊपर तो मिल जाएगा एटलीस्ट. दैट इज द मैक्सिमम थिंग यू ऑल कैन डू. प्रैक्टिकली देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा ये चीज. Okay. Okay, so there's one last question. That, ma'am, what about the Tintin loose powder? क्या कौन से ब्रांड का लूज पाउडर? Tintin. अच्छा, टिंटिन का मेरे पास सिर्फ एक बार वो था जेल लाइनर, अभी भी है शायद, बट बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं उसके यूज किए हैं. जेल लाइनर तो अच्छा है उसका, सो प्रोबेबली यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई ना. आप ट्राई करो, अगर आपके पास है तो आप ट्राई करो, यूज करके देखो. इफ इट सूट्स यू तो फिर आप यूज करो उसको. मैं हम खुद भी जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, ऐसे नहीं होता है कि हमको सब प्रोडक्ट का सब नॉलेज होता है. हम लोग भी अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, देखते हैं, कई बार फेल होते हैं, कई बार सक्सीड होते हैं, बट नॉट ऑन क्लाइंट्स. जब हम क्लाइंट्स कर रहे हैं तब नहीं ट्राई एंड एरर करते हैं. ऑफ द सीन हम लोग भी ट्राई एंड एरर्स करते हैं. बट टिंटिन के प्रोडक्ट्स अच्छे, मैंने ऐसे सुना हुआ है, तो यू कैन गिव इट अ शॉट. Okay, and what is the shade number in MAC Compact? जो मैं यूज करती हूँ दैट इज NC35 एंड NC40. 40 अगर थोड़ा सा देखो डार्किश इसमें, मतलब मेरी एकदम स्किन टोन में रखना है, तो मैं 40 यूज करती हूँ, NC40. एंड थोड़ा सा जैसे अंडर आईज में अपन थोड़ा सा हाइलाइटेड इफेक्ट लेते हैं ना, तो उसमें मैं NC35 यूज करती हूँ. Okay. So yes, guys, I think we have covered all the questions here, and we are almost done with the session. So I hope that you all have liked and loved the session, and you are going to join us in some of the other courses. So for that, you can just go to the description box, and there you are going to find our Pankhuri ka app link. You can download the Pankhuri's app, and you are also going to find the link of all our upcoming courses, and you can register yourself for the one you are interested in. And if in case you really liked our session, please go on Google Play Store and please do rate us, because of your ratings we are able to get more of the classes. So yes, I request you to please go on Google Play Store, rate us and review us so that we could grow and we could become more better just for you. And if you have liked the session, please do like it and
subscribe to our YouTube channel because we come with these live sessions every week. Okay? तो ऐसे जो लाइव सेशंस होते हैं हम लोग हर वीक हमारे कुछ ना कुछ लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, तो इनकी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए आप हमारे सेशन को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड ऑल्सो आपको सारा का सारा जो पंखुरी का ऐप लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। And we have a very great session coming this Saturday, that is with Namrata Soni. As you all know that she is the lead makeup artist in the industry. She has been the makeup artist of Sonam Kapoor, Kriti Senam, and she is going to come on Pankhuri day after tomorrow, that is on Saturday. So I hope that you all are going to join us there too. तो हमारा एक बहुत अच्छा सेशन आ रहा है नम्रता सोनी के साथ, जो कि एक लीड मेकअप आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड की, एंड वो लाइक उन्होंने कृति सेनन के साथ काम करती हैं। वो सो आई रियली फॉरगेट द नेम ऑफ द सेलिब्रिटीज, आई डोंट नो व्हाई, बट यस इफ यू सर्च इट यू विल नो कि वो कितनी मस्ती है यार, बहुत ही सही है वो। तो उनका एक सेशन आ रहा है हमारा मंडे सैटरडे को, तो आई होप आप हमें उसके लिए भी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एंड उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लीज गो जॉइन अस देयर, एंड आई होप दैट यू ऑल हैव लाइक्ड एंड लव द सेशन, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन सम और द अदर वंस। ओके, and please do recreate your looks and send us on our course group. We will be more than happy to see them. Okay, so yes guys, till then, bye bye, take care, have a great day. Bye. Bye everyone. Thank you, Saloni. Bye Divya, bye bye.